will brief you like what exactly is finance, what is business finance, and how it is you can come to know about the financial management. So once I brief you, I'll ask you after every description, like if you are able to understand it or you want to describe it further. But since these things are very basic, so I don't think there will be any problem. And that's why I have modified my study material also, so that it become a little bit easy for you people to understand. So starting with the first unit, so I hope the study material which I have shared is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. Just a second. Okay, so basically, if you can see in the today's scenario, like whenever we are, you can see in our today economics or our today world, or you can say the business related world, the finance is basically what? Finance से आपको क्या समझ में आता है? इट इज बेसिकली अगर आप किसी भी चीज में देखो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंस का मतलब क्या है? इट बेसिकली मीन्स दैट इट इज बेसिकली एज द प्रोविजन ऑफ द मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. So you don't need to have money each and every time, but you need to have something with you that is known as the, you can say, the buffer amount with you. Something amount should be there, but as and when it is required here means that whenever you have a requirement, suppose you have a requirement, you want to purchase a machinery, you want to go and purchase a land, you want to go and purchase for the diversification, you want to diversify your business, or you want to basically enhance your market. Earlier you are in one market, now you want to go to the urban market. Earlier you are operating only in the rural market. So what you need, अगर आपको अपना बिजनेस का ऑपरेशन बढ़ाना है, या अगर हम बोले कि आपको अपना पूरा स्केल बढ़ाना है या रॉ मटेरियल ही लेना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? सो वी बेसिकली रिक्वायर finance. So basically finance here means that the provision of money, like we need to provide the money when it is required. So whether every enterprise, either you start up with a retail shop, जो एक shopkeeper है, either you start up with the malls or you start up with anything, you require funds. Why you require funds? Why you require finance? To Finance. build the business, without money, we can manage everything. So we need money. Okay, I am just asking about like what are the activities for which you require finance? कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए? अगर आपका एक बिजनेस है, लेट्स स्टार्ट, यू हैव स्टार्टेड विद सम शू कॉर्पोरेशन, अगर आपने कोई एक शू का बिजनेस स्टार्ट किया, नाउ यू रिक्वायर फाइनेंस फॉर व्हाट? किसके लिए फाइनेंस चाहिए अभी आपको? कम ऑन. हाँ, see, basically you require finance for each and every activity. You require finance for the raw material, you have to pay the wages to your staff, you need, suppose you have taken up a building on a rent, then you need to pay for that, then you need to purchase a raw material, then you need to buy the machinery, and you need to buy the land and machine. So all these activities require finance. So the basically the thing is that the finance is required for each and every activity. That is why it is called as a life of the enterprise. So if you are having a suppose you have finance with you, then you can easily run your business. अगर आज आपने आइडिया बना लिया, ठीक है मुझे रातों रात पेट्रोल पंप लगाना है, is it feasible for you people? No, ma'am. Yes, No, ma'am. because yeah, because you basically need finance for that. Until or unless you have your own money, or either you can get a credit for that, only then you can start up with your business. So that is the finance is known as the lifeblood of a business. So what is finance? So finance may be defined as the art and science of managing money. Because you have money with you, then you need to manage also, like how you have to बेसिकली एम्प्लॉयड दैट मनी. आपके पास मनी तो है, आज आपको बिजनेस में आपके पास 1 लाख रुपए, अगर वो 1 लाख रुपए आप गए फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ली, इज इट फिजिबल? आई मीन सॉरी, इज इट यू कैन से प्रॉफिटेबल फॉर यू? नो. You need to manage money. That means you need to have, okay, this is the funds which I am requiring for the business, और मुझे कितना कब कब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जब तक आप मैनेज नहीं करोगे, so that will be of no use. So basically all the financial services or instruments which you require for
are included in this finance. So it is basically, finance means you need to provide money whenever it is required in the business. So coming on to the definition, according to Khan and Jain, finance is the art and science of managing money. As I told you, you basically have the art that you can employ your money, then you have to manage that money. Aapne money le liya, then you have to employ it profitably so that you are able to yield it a profitable interest. ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट हो, आपको उसको ऐसे एम्प्लॉय करना है. Then, according to Oxford Dictionary, the word finance connotes management of money. So, management of money includes everything that you need to plan the money. हमें कहाँ से लेना है, then you need to basically manage it. मुझे कैसे वो money को employ करना है, मुझे कहाँ कहाँ पे उसको deploy करना है, कहाँ कहाँ पे मुझे funds चाहिए. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Then coming on to the definition, the finance, I have given one more definition, then you can go from all these things. Okay. Now moving on to the business finance. See, as a name indicates itself, business finance. So it is basically means of funds and credit employed in the business. So what is the meaning? Funds, आपके खुद के funds. That means your equity capital. ओके, एंड द क्रेडिट मींस आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड से लोन ले सकते हो. सो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस मींस द फंड्स एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया. सो you can see the finance is the foundation of a business. Once you have to start with the business, then you need to learn what are the requirements and how you are going to get that money. So finance requirement are to purchase the asset, like I told you, like what are the various requirement for which I need money. मुझे किस किस चीज के लिए पैसा चाहिए, asset purchase करने के लिए, raw material, goods and all other economic activities. Now coming on to the definition of business finance, what is the definition? According to B.O. Wheeler, meaning, what is the definition? Business finance include those business activities that are concerned with acquisition, means आपको कैसे पैसा लेना है, and conservation of capital funds, how you have to deploy that money, आपको कैसे वो invest करना है, in meeting the financial needs and overall objective. ठीक है, आपको अपनी financial needs business की fulfill करने को वो कैसे use करना है, that is a part of a business finance. Clear? Yes, ma'am. So basically we can say that you are included what, आपको कैसे funds लेना है, कहाँ से raise करना है. Okay, what are the various sources from where we can raise the funds? Bank, okay. Other? और कहाँ से ले सकते हो? ठीक है, एक तो आपने बैंक से ले लिया, और कहाँ से ले सकते हो फंड्स? Cooperative finance, society. ओके, या और कहाँ से ले सकते हो बेटा? finance, Financial institution. Okay, financial institution. Then you can employ your own funds also. yes, own fund Yes, and what we say, अपना land रहेगा वो भी ये करके. हाँ, that is credit. Means आपने अपना land है वो mortgage पे रखा और आपने अपना business startup किया. Is it okay? Now coming on to the financial management, which is our topic for the day. What is financial management? So basically financial management is the mix of two words, financial and management. So what is financial? As I describe you, what is finance? Means procuring or raising of money and allocating those resources on the basis of monetary requirement of the business. Finance का definition मैंने आपको बताया था, वही same financial का meaning है कि how you have to raise money, आपको पैसा कहाँ से लेना है, and how you have to use that money on the basis of the requirement of business. अपनी business की requirement से कि आपको कैसे कैसे वो business में पैसा employ करना है. Okay? Yes, ma'am. Okay, then the coming on to the management. What is management? All of you should know this. I mean, what is management? You have read in your first semester. What is management? Basically planning, organizing, coordinating, controlling the human activity with reference to financial function. Like you have to basically plan money, then you have to organize, then
employing that money, okay, वो आपको वो सारे functions basically लगाने हैं इसमें, ठीक है. So what is it? Financial management, it's like raising and utilizing of funds. So finance include distribution of funds in the form of dividend. Obviously first you have employed the money, आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, then you have to distribute money. Shareholders आपके बिजनेस में तभी पैसा लगाएंगे ना अगर आप उनको कुछ डिविडेंड दे रहे हो. And then you have also to describe like what is the retention of profit. You can't deploy, okay, you have a profit of 10,000 rupees, then you can't पूरा का पूरा 10,000 तो नहीं दे दोगे ना. You need to have something so that in case of future needs of cash, you can rely on that sources. So you need to properly manage all these things. So coming on to the definition, financial management is the application of general manager principle to the area of financial decision making. Obviously जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो आप सब इसमें लगाओगे. आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको मनी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. देन यू नीड टू कोऑर्डिनेट कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है. देन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन दैट, लाइक हाउ यू आर कंट्रोलिंग द मनी. यू कांट डिप्लॉय पूरा का पूरा, आप प्रोडक्शन को भी नहीं दे सकते, मार्केटिंग को भी नहीं दे सकते. देन यू नीड टू हैव like how you have to, once you have dispersed the money, मैंने production को दिया, मैंने marketing को दिया, then you need to have the control on that so that the purpose for which you have given money, जिस purpose के लिए आपने उनको पैसा दिया है वो उसी purpose के लिए use करें. So basically you have to control that thing. Okay, so the financial management is the, I have given you 4-5 definitions, so whichever you feel okay I am good with this, you can remember that definition. Then going on to the approaches of financial management. See, basically, if you have seen like the business have changed from earlier scenario to today's scenario. Okay, so the basically the financial management approach has already changed. पहले क्या था और अभी क्या है? So we will run two basic approaches to the financial management. So basic two financial approaches are, first one is the traditional approach that was basically there from 1920 to 1950. ये approach चलती थी. So वो क्या approach थी? What is the traditional approach? That is based on the past experience and traditionally accepted method. So what is a traditionally method? Like you need traditional approach basically consist of one area. You need to, वो क्या बोलते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अगर वो सोचते थे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अगर बिफोर 50s, इफ वी कैन सी बिफोर द सिनेरियो, यू कैन से पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस, तो उसमें क्या रहता था? My financial management basically mean for that type is like arrangement of funds from lending body. सिर्फ और सिर्फ funds को लेना, arrangement of funds from the lending body. So lending body will be the one who can give you credit, जो आपको credit दे सकता है. यहाँ पे lending body का मतलब है जो आपको पैसा दे सकता है. Either it can be bank, either it can be financial institution, either it can be your any friends or relative. Okay, that is the lending body. Then arrangement of funds through various financial instruments. So various financial instrument here means आप शेयर से भी पैसा ले सकते हो, डिवेंचर से भी पैसा ले सकते हो. You can float your shares in the market and then you can raise money. So बेसिकली फर्स्ट और टू में आपने क्या पढ़ा कि आपको अरेंज कैसा करना है फंड्स को, समझ में आया? Yes, ma'am. Then you have to find the various sources of funds. So traditional approach basically give emphasis more and more on arrangement of money. आपको कहीं पे भी इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी का दिखा कि हमें एम्प्लॉय कैसे करना है, अपने पैसे को कैसे लगाना है? नहीं. सो ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेसिकली जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता था हाउ यू हैव टू अरेंज मनी. क्लियर? Yes, ma'am. Now limitations, coming on to the limitations. See, they have given a very narrow approach. नैरो अप्रोच कैसे है? उसने बोला कि आपको सिर्फ अरेंज कैसे करना है मनी, आपको वो बताया. आपने मनी ले लिया, सपोज आई टोल्ड यू कि आपने एक बिजनेस है, आपने 10,000, आपने देखा कि मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आई नीड 1 लाख रुपीज. यू गो टू अ बैंक, अप्लाई फॉर द क्रेडिट और आपने वो 1 लाख रुपीज ले लिया. क्या आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहीं पे खत्म हो गई? No, ma'am. Yes. So what else you require to do? You basically require like how you have to use that fund. ठीक है, अगर आप उसको प्रॉफिटेबली यूज नहीं करोगे
जिस पर्पस के लिए लिया है उसके लिए नहीं लगाओगे या उस जगह नहीं लगाओगे जिससे आपको प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो फिर अगर आपने वो नहीं किया तो उसका कोई यूज ही नहीं हुआ ना, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट traditional approach is basically criticized, or you can say there are various limitation. Now I'll explain what are the limitation. First, there is more emphasis on raising of funds. See, in all the 3 points you can see there is only and only one point that is being described, that you have to arrange for the money. So this approach basically, you can say, give more importance to the procurement of funds from external sources, or basically it neglects the issues related to the efficient utilization. यूटिलाइजेशन पे इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि उस फंड्स को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. दे गिव ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंस टू द रेजिंग ऑफ द फंड्स. ओके, then second, you can say it is being criticized. क्या इसकी limitation थी? That is, it disregard the financial problem of a non-corporate enterprises. Now, what is the non-corporate enterprises disregard means? That it plays more important on the problem faced by corporate enterprises in procuring the funds. क्या problem उनको आती है? अभी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म्स है, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो बेसिकली इसमें इंक्लूड ही नहीं किए गए थे. ओके, so it is basically related to the joint stock company. सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव देखा कि इसने बाहर से फंड्स लिया, शेयर होल्डर से ले लिया, इससे लिया. They don't take into consideration the proprietorship as well as the partnership firm. Then it disregard the routine problem. So what is the routine problem? Routine problem, basically you can say the approach basically on this focus on the special events like इनकॉर्पोरेशन, मर्जर, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. बट डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आप फंड्स कैसे रेज करने वाले हो, वो उन्होंने नहीं बताया आपको. Then you disregard working capital financing. So this approach gives more importance to the long-term financing only. It doesn't give much importance to the working capital financing. So this is basically the traditional approach, which give more and more emphasis, like how we can raise money. हम पैसा कैसे कैसे raise कर सकते हैं. It doesn't give any importance to the use of the money, like how we have to utilize that money. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now moving on to the next, that is a modern approach. So what is the modern approach? I told you like traditional approach का क्या disadvantage था, किस basis पे उसको what are the limitation, not the disadvantage. ठीक है. So modern approach का क्या था? Modern approach क्या था? It is more conceptual, or you can say it is more analytical. Analytical is basically why, because it tells you like how you are using the money. Then you can analyze कि जिस पर्पस के लिए मैंने लिया था, क्या मैंने अपने फंड्स उसी के लिए यूज किए, और अगर मैंने किए वो कितने इफेक्टिवली यूज किया और मुझे क्या एट द एंड मिला. सो इट इज बोथ एनालिटिकल. आपने पहले उसको प्लान किया, देन यू एनालाइज कि क्या मेरी जो मैंने चीजें प्लान की थी उसके हिसाब से हुई या नहीं. सो यू आर बेसिकली जजिंग योर लास्ट रिजल्ट. ओके, so the modern approach basically divided into 3 major decision. What are the 3 major decision जो फाइनेंस में आपको लेनी है बेटा? सबसे पहला आपका डिसीजन रहता है इन्वेस्टमेंट, then is the financial decision, then is the dividend policy decision. Okay, now first I'll start with the financing decision. So the decision, what is the financing decision? If anyone of you can tell me financial decision क्या होगा? फाइनेंशियल डिसीजन में हम डिसाइड करेंगे क्या क्या जरूरी है, कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और क्या लेना है अगर कोई ऑफिस है, उसके अकॉर्डिंग तो हम डिसीजन लेते हैं. Okay, so basically you can say financing decision बेटा यहाँ पे उसका मतलब है how you have to raise funds. आपको पैसा कहाँ से लेना है. Financing decision mean from where you can raise the funds. Is it clear? So the decision is basically regarding like how you can mobilize funds for the investment. So the finance manager has to basically take the like how you can acquire the finance. अभी finance देने के लिए क्या sources रहते हैं? There are basically, you can say, 2 type of sources from where you can get the funds. So a person can either raise fund from his own resources,
वो क्या रहता है, मैंने आपको क्या बताया था, ओन रिसोर्सेज मीन ही कैन यूज इक्विटी और ईदर ही कैन यूज डेट, ठीक है, या तो वो अपना खुद का पैसा लगा देगा या वो बाहर से लोन लेके लगा देगा। सो बेसिकली ही हैव टू डिसाइड, ईदर ही हैव टू इन्वेस्ट हिज ओन मनी और ही हैव टू गो एंड गेट सम क्रेडिट। सो अभी आपने खुद का फंड्स लिया, व्हाट इज द एडवांटेज? सपोज यू प्लान, ओके आई विल इन्वेस्ट माय इक्विटी, मेरे पास खुद के 1 लाख रुपीज है, मुझे 50,000 चाहिए, मैंने बिजनेस में डाल दिया। अभी इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, टेल मी। We don't have to pay the interest. यस, वेरी नाइस। कोई डेप नहीं रहेगा और Yes, you don't have any obligation, so you are basically free from any obligation. Yes. So other thing, like either you can borrow funds also. So borrow fund करने में क्या फायदा रहेगा? It will not be a, you can say you can have your own money with yourself so that you can employ it whenever you don't have any source from where you can get the money. And borrowing money from outside is mostly cheaper because you don't you basically pay interest for that. So sometimes it's basically cheaper for your convenience. So how you can raise money on your own? क्या सोर्सेज रहेंगे? इफ यू हैव अ बिजनेस देन यू हैव टू रेज मनी, तो क्या सोर्सेज रहेंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग आर द सोर्सेज which are being used by the businessman. Okay, so these are your sources where you can use. And if you have to go and purchase from other, like it will be debentures, long term loans. So these are the sources. अगर खुद का पैसा लेना है तो आप शेयर कैपिटल और उससे ले सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग से। बट अगर आपको बाहर से लेना है तो आप कहाँ से लोगे? डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, वो कहाँ से लोगे? बैंक से लोन लोगे ना, दैट इज obviously a part of a credit only. Yes, ma'am. Okay, so in case you borrow money from outside, there is always a risk, like if you are not able to pay that money or the principal amount, so what will happen? You will obviously have the case of insolvency. So you basically need to have a strike between, like what type, आपको कितना खुद का पैसा लगाना है और कितना बाहर से लेना है. So you need to have a proper combination for that. So the finance manager basically take the finance decision. कैसे? He basically form the portfolio. ठीक है, मेरा कितना डेट रहेगा एंड कितना इक्विटी का वो रेशियो रहेगा, देन he employ that. Okay, डेट और इक्विटी का क्या बैलेंस रखना है, he decide and accordingly he plan the things. Then determination of financing pattern of long term funds requirement. As I told you, there are basically two type of requirements in our business. एक आपका रहता है long term और एक आपका रहता है short term. So the long term funds here means that you require funds for employment in the you can say land, capital. Okay, land, capital, machinery, that are your long term. So you can say whose benefit is being generated over a period of time. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म हियर मींस कैपिटल फंड्स, कैपिटल में आप इन्वेस्ट करते हो. ओके, फिक्स्ड एसेट्स Yes, में. ma'am. ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो मुझे कहाँ से लेना है. ओके, देन यू नीड टू फाइंड आउट मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा कहाँ से लेना है. Okay, then raising of funds through issue of financial instrument. As I told you, if you want to raise money on your own, so what you can do, you can go for equity, you can go for preference shares. Okay, अगर हमें वो नहीं करना, then I have to go for find out debentures, bonds. So you have to find out like which source you are going to use. Then arrangement of funds from banks and financial institutions for long term, medium term and short term requirement. So if you decide okay I will have get मुझे बैंक से ही लोन लेके करना है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे बैंक से क्या लॉन्ग टर्म लोन लेना है, शॉर्ट टर्म और कितना क्या लेना है. ठीक है,
So arrangement of finance for working capital. So working capital is something, the funds which are required for your day to day activities. Working capital means जो हमें day to day activities के लिए जाता है, वो funds को हम बोलते हैं working capital. Okay. And then you have to consider the interest burden on the firm. अगर आपने बाहर से लिया तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे बाहर interest भी pay करना है. Okay. So on the basis of this, you will take the financing decision. Okay. Yes, ma'am. So what you have to do basically in this, first you have to decide requirement of funds. Long term, short term क्या है. Then you have to decide optimal combination. कितना debt use करना है, how much combination of owned fund, that means how much funds you have to employ on your own, and borrowed funds, कितने मैं borrow करके लगाने वाली हूँ. Then you have to determine the financing pattern. Long term का financing कहाँ से लेना है, short term का financing कहाँ से लेना है. Clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Now I'll move to the investment decision. Now, what is the investment decision? It is basically, you can say, Where to investment. invest? Yeah, where to invest. So this is concerned with the allocation of capital, how you have to allocate the money. Okay. You basically require money for fixed asset, or you can say you require money for the short term or the working capital. So the investment in the fixed capital is known as capital budgeting. Okay. And the financing, investment in the day to day requirement, जो आपको funds चाहिए रहते हैं, that is known as the working capital. So you have to decide how much funds you have to employ, you can allocate to the long term, and how much funds you have to allocate to the short term. So finance manager has to evaluate the investment. What is the expected result? कितना result वो expect करते हैं और उसमें कितना risk है. ठीक है. और जितना आपने देखा कि हाँ मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना मुझे करना है, देन इज इट, यू कैन से, इज इट प्रॉफिटेबल फॉर यू और नॉट. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Then coming on investment decision of a finance manager cover the following areas. What are the areas? First, he need to ascertain total volume of funds a firm can commit. कितना firm commit कर सकता है funds को. Then is selection of the capital investment proposal. So this is basically the explanation of what I have given you कि आप कहाँ पे funds को invest कर सकते हो. Then the last that is there is financial decision I have covered. Now the last that is there is the dividend decision. What is a dividend decision? Dividend हम किसको देते हैं? Dividend किसको मिलता है? Dividend is basically a part which is a divisible profit. आपको profit हुआ तो वो आप किसको देते हो? देते हो ना shareholder को in the Yes, form of ma'am. dividend. So that is the Shareholder. yes, shareholders को हम देते हैं part of our divisible profit which we have earned during the course of our business. So that is known as the dividend. Okay. So अभी आपको क्या decide करना है? Finance manager has to comply of the legal provisions और he need to follow the various provisions कि कितना funds वो अपने पास रखेगा और कितना funds वो shareholder को देगा. Okay. So the dividend decision is related. It involves a determine the percentage of profit earned by enterprise which is paid to the shareholder. So the dividend payout trust me evaluated in the light of objective of maximizing the shareholder wealth. So the financial, if you can say the various decision, first he need to determine dividend and retention policies. कितना उसने dividend decide किया मुझे अपने shareholders को देना है. And as I told you, वही funds हैं जो उसने income earn की, वो पूरा का पूरा भी shareholder को नहीं देगा. But ऐसा भी नहीं हो सकता कि that your business is running into very boom period and you can't say कि मैं अपने shareholders को कम दूंगा. Otherwise they will not be interested in your company. So you need to find out the proper policy, like how much funds you have to give to the shareholders as a part of a dividend and how much funds you need to employ in your own company. That is your retained earning. Then is considering the impact of level of dividend and retention earnings. As I told you, कितना retain करना है. Then you consider possible requirements of funds by the firm. देखो अभी आपने retain करना है because
क्यों रिटेन करना है? अगर सपोज मैंने आज के टाइम में मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आई डिसाइड कि नहीं मेरा बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोइंग स्टेज में, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, आई विल सेट अप विद माई, और मैं एक और यूनिट स्टार्ट करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे, डिविडेंड भी देंगे, बट क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट अपने पास ज्यादा रखेंगे, ताकि वो जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करें वो उसमें हमें हेल्प करे। जब मैंने एक नया यूनिट अपना स्टार्ट कर लिया, सपोज मेरा पहले एक यूनिट था शू का, नाउ आई स्टार्ट विद माई सेकेंड यूनिट, तो उसके लिए भी तो फंड्स चाहिए। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिट कि अगर आपके पास खुद का फंड है, देन व्हाई टू गो एंड हैव अ क्रेडिट, तो आप थोड़ा फंड अपने पास रखोगे। ओके, so you need to form a proper policy for that. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, now coming on to the objectives of financial management. See, financial management have certain objectives which need to be fulfilled. So the basic, or you can say effective procurement and efficient use, lead to proper utilization of the finance by a business concern. So as I told you yesterday also, there are two main objectives. जो पहले था सेम वे, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच था और मॉडर्न अप्रोच था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज समथिंग जो पहले था, बिकॉज उस टाइम में क्या था, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज विद द सेम पर्सन। सो अगर आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और यू कैन से पार्टनरशिप, उसमें जो ओनर होता था वही तो आपका, उसी के पास मैनेजमेंट रहता था। सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. So what is the aim of any economic activity if you are going and earning is the प्रॉफिट. अगर अब मेरा खुद का शॉप है, मेरा खुद का एक सपोज करो एक स्मॉल यूनिट है, मेरा ही पैसा लगा है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होगा, दैट विल बी अर्निंग द प्रॉफिट, बिकॉज आई एम द sole person who has employed my funds in that. So my ultimate function will be, my ultimate aim will be earning profit. Okay, and earlier what we see, अगर अभी भी हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, दैट मीन इट इज गुड इनफ. ठीक है ना, हम प्रॉफिट ही देखते हैं ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये अच्छा है, बिकॉज इट विल बी एबल टू फेस द कंपटीशन. अगर प्रॉफिट होगा तभी आप कंपटीशन फेस कर सकोगे ना, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is basically like you need it is basically you can say traditional or a narrow approach where we maximize the profit. हमारा एक ही aim होता है that we run our business only and only to maximize. So what are the various features? A profit maximization is also called cashing per share maximization. It lead to the maximize a business operation for profit maximization. That means you maximize your business operations कि ज्यादा से ज्यादा मेरा business चलेगा और प्रॉफिट अर्न होंगे, तभी मैं बिजनेस सर्वाइव कर पाऊंगी. Ultimate of business concern is earning profit, so it is considered possible to increase the profitability of the concern. So only way if you want to survive is to increase your profit. So अभी हम efficiency देखते हैं, अच्छा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, what we see, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, this is what we typically do. Then profit maximization objective help to reduce the risk of business. The risk of business mean it is able to face the competition and it is able to survive in the market. Now there are various arguments which are in favor. देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, some people agree with that aspect and some people don't. So what are the favorable arguments in this? Main aim is earning profit, so everyone goes and earn profit so that it can survive. तो सबका aim तो यही होता है ना कि if I have invested 10,000 rupees and I am able to earn 12,000 money, so only then I'll go and invest. अगर मैं आज के टाइम को आपको बोलती हूँ कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तुम 10,000 रुपया लगाओगे पर तुम्हें मिलेगा 5,000, कोई करेगा इन्वेस्ट? नो. बट No. इफ यू या But if you have that perspective, okay, I'll invest 10,000 rupees in it and I'm able to gain 12,000 rupees. So obviously I will go and earn profit and that will be my main aim. Then profit is the parameter of business operation. So what is the parameter? Like we judge कि अगर business अच्छा चल रहा है, what we do? We basically judge, okay, if it is making money, if it is able to earn profit, so that is why it is beneficial, or you can say it is good enough. Then profit reduces the risk of the business concern, so it will be able to face the various competition. Profit is the main source of finance, because if you have
earned profit, then you will not have to go and deploy for the credit. Then you can employ your own funds with that, and you will have various, you can say a profit will be a source of you for the diversification if you need funds for that. So it will be a source of funds for you. So you meet the social needs also. Okay, just a second, let me have water. Okay, so there are various points which are against this. What is it? A profit maximization lead to exploitation of workers, because you have obviously one name that I have to basically earn more and profit, earn more profit. So what you do, you basically don't give a higher salary to your workers. You don't provide them various health benefits or the safety standards which are required. Okay, तो आप क्या करते हो, आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है कि मुझे बेनिफिट चाहिए. Okay, you don't consider the societal norms in that. Then profit maximization create immoral practices such as corrupt practices, unfair trade practices, because what you do, okay, you go quality cut hum karte hain so that we are able to earn profit. So that is something unfair trade practices. Then you corrupt practices. Corrupt practices means you go and do something which is not legally. Okay. Then profit maximization objective lead to inequality among the stakeholders, because it is not like, as I told you, that you are only and only person who will be employing your funds. Agar aapka share ho, agar aap joint stock company mein ho, then other person will have also employed their funds, so they will also be interested in something na. If you are just focusing on your profit, then why they will come and employ their funds in your company? So these are basically, you can say, drawbacks. First, it is like, it is vague. Vague is like profit उसने बोला आपको, like what profit it is, it doesn't give value to that. Okay, उसे profit clearly describe नहीं दिया. Okay, and it ignores the time value of money. What is the time value of money? It said, okay, I have to earn money, but you can say there is a difference between the actual cash flow and the net present cash flow during a particular period. So this is why profit maximization is basically ignored, or you can say basically criticized. So should I move with other wealth maximization? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So wealth maximization means a modern approach. As I told you, it involves innovation and improvement in the field of business concern. You are basically improving on something. You have you're upgrading your technology. So it means wealth means shareholder wealth. So the wealth of a person who are involved in the business. So it is not only you who will be involved in the business. So shareholder wealth को अगर आप maximize करोगे, obviously they will be more interested because they have employed their money in your company. So why it comes into existence? Because there is a separation of ownership, as I told you. So अभी ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग के पास है. ओनर कौन है? शेयर होल्डर. मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. So that is why if you go and say, okay, I have to maximize my wealth. So maximization of wealth means that you are going to increase the wealth, shareholder wealth. So obviously they will be interested in company. So there are various, you can say, favorable point in this. The first one that is there is it takes into consideration long run survival and growth of the firm. So as in the profit maximization, the only benefit is like कि profit earn करना है, but यहाँ पे क्या long run survival है. If you are going to maximize your shareholder wealth, so they will be more interested with you and they will be employing more funds with you. So there are more chances that you will be able to survive in the market because you are going to basically increase their wealth. So that is why. It is considered with the object of owner's economic welfare. Economic welfare, owner's economic welfare means the owners are the shareholder. It suggests the regular and consistent dividend payment. So obviously, when you are employing your funds or आप shareholder की wealth को maximize कर रहे हो, so what you will do is you will regularly pay them the dividend and they will be more interested.
Then financing decisions are taken with a view to improve the capital appreciation of the share price. Because share price क्या है, बढ़ेगी obviously if you are taking this into consideration. It consider risk and time value. Basic क्या है उसमें, वो risk और time value को consider नहीं करता, but यहाँ पे वो risk और time value दोनों को consider करता है. Okay, so maximization of firm's value is reflected in the market price. देखो अगर किसी कंपनी की मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता है तो हम बोलते हैं ना वो बिजनेस बहुत अच्छा करता है. आजकल हम क्या करते हैं, आपको किसी अभी हम देखते हैं कि किसी कंपनी का शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द मार्केट. सो दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट. ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पार्टली इनेबल्स द फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वो पार्टली इनेबल करता है बिकॉज योर फंड्स मे बी योर ओन फंड्स ओनली, यू आर नॉट पेइंग इनफ फॉर द शेयर होल्डर्स. सो अनफेवरेबल पॉइंट्स क्या है बेटा इसमें, wealth maximization leads to the prospective idea of any business concern, but it not be suitable to present day business activities. See, everything has a plus as a negative. तो इसमें क्या है कि present day business activities को वो ध्यान नहीं दे रहा है. Wealth maximization is nothing, it is profit maximization. तो उनका ये कहना है कि ultimately if you are going and increasing the shareholder wealth, so it is also a part of a profit maximization because उनका profit बढ़ रहा है. Okay, then wealth maximization create ownership management controversies. Why? Because owners are the, I said ownership and management is different in this way joint stock में. तो उसमें क्या होगा, अगर shareholder का wealth बढ़ रहा है so management will be not interested in that. This is what their perspective it is. So management alone enjoys certain benefits, so management के पास ज्यादा benefit होंगे. So this is why it is being criticized. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay, now tell me, should I proceed with the other topic or should I repeat? जो पहले हुआ है उसी को हम बात करेंगे. Now you tell me, then I'll proceed. If you are interested, I'll start with the other topic. Otherwise, मैं वही जो भी हुआ है उसी को explain करती हूँ. And tomorrow we will have a session by 11 to 1. In the morning we have a session 11 to 1. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. 11 to 1 we will have one session. So what I'll do is उस सेशन में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद अ थर्ड यूनिट थ्योरी, दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो वन थिंग व्हिच आई एक्सपेक्ट यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज, जितना भी मैं प्रैक्टिकल आपको कराने वाली हूँ, आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव द बुक्स विद यू. No, ओके, यू डोंट हैव? no, ma'am. We don't have. By Zoom. Okay. Currently, I don't have. Okay, if you don't have, then I do one thing. I'll download basically 1 or 2 PDF if it is possible. मेरे ख्याल से पहले की PDF भी मेरे पास होगी. What I'll do is मैं वो PDF आपके साथ शेयर करूंगी. Okay, and the practical aspect हम कैसे करेंगे? I'll before I start with my session, तो मैं क्या करा करूंगी, आप लोगों को वो question दे दूंगी, so that you have that question and then I'll solve that question for you. And how many of you are from non-commerce background? Me, Advait. Advait, okay. You are from Advait. Advait, Engineering what's your background. engineering background. What's your profile in engineering? Like, what's the branches there? Electronics and telecommunication. Okay, fine. Anyone else? Ma'am, I am Ajay. अजय. अजय, आपका क्या था पहले? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, केमिकल था मेरा. ओके ओके, ठीक है. अभी जो मैं करवाती हूँ वो आपको समझ में आता है? बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, तो मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, जितना आपको समझ Yes, में ma'am. आता है. ओके Yes, ओके. Yes, ma'am. मतलब ये चीजें पता है लेकिन वो कभी पढ़ी नहीं, इसीलिए समझ में नहीं आता. ऐसा भी होता है कभी कभी. Yeah, that is fine. Because see, I'll start with the third unit. That's why, because जो third unit है या fourth और fifth unit है, उसका आपका कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं. I'm very clearly telling you. जो उसका न्यूमेरिकल है उसका कुछ भी ये होना जरूरी नहीं है कि मेरे बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. You don't need to have. And for this MCQ part, ये third, fourth, fifth and first unit are very important because उसमें छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं. Like there are some
सेकंड यूनिट में हम क्या करेंगे, रेशियोज करेंगे. सो बेसिकली आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे बैलेंस शीट बनाना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल फॉर्मूला है. अगर आपने एक फॉर्मूला लर्न किया, आपको पता है वो कैसे लगाना है, योर प्रैक्टिकल विल बी सॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स. Okay, but Yes, ma'am. when I'll be solving the numerical, what I expect from all of you is just be attentive, attend the classes. Okay, and once I complete my session, after every my session, I'll give specially 10 minutes to students so that they can basically you can say they can understand like what I have described. Okay, kuch bhi problem rahega, then you can tell me, okay ma'am, I'm not able to follow it, or we can repeat the practicals. तो practicals जितने मैं आपको क्लास में कराऊंगी, उसके अलावा I expect at least you should practice them. Then I'll Sure, have ma'am. some, okay, once I complete with my first unit, I'll try to not tomorrow, but maybe on my next session, maybe it's on Monday or whatsoever, I don't have exact idea. तो मैं Monday या Tuesday जब भी मेरा session आपके साथ होगा, I'll give you the MCQs. Okay, you prepare those MCQs. Okay, ma'am. उसके Yes, ma'am. बाद ठीक है, फर्स्ट यूनिट का मैं आपको दे दूंगी. Then first and after third unit, I will have one test with you. I'll conduct one test. So I prefer that you people practice side by side so that at the end you don't have to face any issue. Okay. Okay, ma'am. Okay. So we have covered with this objectives, these things. Now what we are left with is like we are left with our, as I told you, finance and its relation with other discipline, and second is the finance manager ki responsibility. Okay, what are the various responsibility of being a finance manager? Once you are in a company, you are there, then what are your basically responsibility that lies with you? Okay, now finance and its relation with other discipline. I'll just start with the finance and economics. I'll complete this, and rest I'll take tomorrow. Is it fine? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. I think आज का पेस तो ठीक था ना, आज तो ज्यादा फास्ट नहीं हुआ ना. नहीं मैम, अच्छा No, था. ma'am. It's okay. Okay, लास्ट fine. लास्ट का सेशन भी अच्छा था मैम, बट थोड़ा वो मुझे बहुत फास्ट लगा कि हाँ ठीक है, आपने Good job, बताया तो guys. मैंने वही इसीलिए रिपीट किया. सी आई एम नॉट इन अ हरी, वी हैव एम्पल टाइम विद अस, वी कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स आल्सो, एंड वंस माय सिलेबस इज बीइंग डन, आई विल टेक योर प्रैक्टिस सेशंस आल्सो. दैट इज नॉट एन इशू, एंड इट इज really appreciable that you let me know, okay ma'am, go a little bit slow, because everyone has a different pace. Okay, maybe I'm a bit faster, but I think I mean, with my communication, you don't people have any issue, because I generally communicate in English or in Hindi. I don't know Marathi much, so I'm not very नो मैम, comfortable. इट्स फाइन, इंग्लिश इज It's fine. Okay, okay. English, Hindi is fine, because I'm not able to follow with Marathi and all that stuff. So if you people have any issue, then you can let me know. But the only thing is I don't know Marathi, and you have to bear. Okay, and it's really appreciable if you people can go and work on your communication skills, because this is what I expect from all of you. Being a management students, you should work on your communication skills, because once you face an interview, then they are basically आप कितना कम्युनिकेट करके उनको बता पाओगे आपको क्या आता है. दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू लिसन, ओके यू हैव अ मैनेजमेंट डिग्री. देयर आर ample of students who will be having that MBA degree with you, but how you basically present yourself is very important at the time of interview. So try to be work on your communication skills as far as it's I think it's important for everyone. Okay, so now coming on to the finance and economics. So the relationship is, see, in economics, if you have read in your earlier semester, there are basically two types of economics. We division of economics, you can say micro and macro. So the finance is really impacted by both them. Okay, दोनों से ही उस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट आता है. कैसे? अगर आपने कोई फंड्स रेज करने हैं, so you are impacted both by the micro as well as the macro factor. So what is it? Like if you मैक्रो फैक्टर्स, बेसिकली आपके बैंकिंग सिस्टम कैसा है, मनी मार्केट कैसी है, कैपिटल मार्केट कैसी है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन से हैं, क्रेडिट पॉलिसी क्या है बैंक की. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इम्पैक्ट योर डिसीजन. सो
तो दीज आर द मैक्रो फैक्टर्स जो मैक्रो लेवल बड़े लेवल पे हैं. कंपनी अभी गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस है, आरबीआई की क्या रेगुलेशंस है, दीज आर द मैक्रो फैक्टर्स. ठीक है, उनको देखने के बाद ही आप सोच सकते हो कि मुझे फंड्स कितना लगाना है और कहाँ से लेना है. ओके, देन कमिंग ऑन टू द माइक्रो फैक्टर. माइक्रो फैक्टर्स आर समथिंग दैट आर माइन्यूट इन नेचर. ठीक है, so you need to basically understand like money value discount factor, economic order quantity. ठीक है, अब आपको माइक्रो फैक्टर पे भी देखना है. अच्छा, इंडस्ट्री का कंपटीशन लेवल कैसा है, जिस मार्केट में मैं प्ले कर रही हूँ उस मार्केट की कंडीशन कैसी है. दीज आर द बेसिकली द माइक्रो फैक्टर. सो द फाइनेंस इज बेसिकली impacted by both the factor, that is the micro as well as the macro. So you need to take into consideration both the factor, micro as well as the macro. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so this is regarding the finance management and economics, like how it is being related or how it impacts your decision. Now after this we are left with financial management and accounting, mathematics, production management, marketing and human resource. Okay, so then we will cover all this tomorrow only, and after that I'll start with the working capital management. What I expect from all of you is whatever I have done, just you can, in case you have any issue, you can ask me. Tomorrow I'll give the PDF to ma'am and then she'll forward, sorry, to sir, and sir will forward to you all of you. Okay, once my first unit is being completed. Ye- Tomorrow I'll try that I should start with the third unit with some basics also. If I can take up with the numericals, so I'll take those numericals also, so that we can start with that. And for the first unit, I'll still search. If it is possible, I'll try. We can conduct an online test tomorrow, so Okay, that I ma'am. can see like how much points are being clear to you people, or still you are lagging somewhere, so that I can repeat something if you people lag on some behalf. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay. Yeah. Ma'am, before taking online exam, so please share PDF so we can read, then we can conduct the test. ओके, सी अद्वैत, जो भी पीडीएफ में रहेगा वो ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इन द एमसीक्यू कि इसका डेफिनेशन क्या था या वो क्या नहीं था. आई विल आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि फाइनेंस का इम्पैक्ट, सपोज इट वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू कि फाइनेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, ट्रेडिशनल अप्रोच किससे रिलेटेड, दैट इज द थिंग्स व्हिच यू कैन इजीली रिमेंबर. But still, if you want, okay, I'll share the PDF. And there are no, I'm not going to give any marks for that. That is just for your reference only. Okay, fine, I'll do that thing. पहले मैं आपको दे दूंगी, then we can discuss, okay, what exactly you are expected to do in that. Okay, Yes, ma'am. okay. तो Yes, फिर ma'am. उसके बाद में ले लूंगी अगर आपको ऐसा लगता है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. The only thing is you need to revise this thing. Okay. So coming on to the working capital management, working capital management में जो numerical रहेंगे या जो कमेटी के रिकमेंडेशन है, they are very important and you need to basically remember that. Okay, तो उस पे भी मैं नोट्स निकाल लेती हूँ और मैं आपको सब दे देती हूँ वर्किंग कैपिटल. ओके मैम, Yes, ma'am. या प्रैक्टिकल इस पे वर्किंग कैपिटल पे मींस प्रॉब्लम है क्या इस चैप्टर पर? हाँ बेटा, है ना. और 5th चैप्टर में भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अभी फर्स्ट यूनिट के अलावा बेटा हर में आपको प्रैक्टिकल रहेंगे, हर में रहेंगे, हर चैप्टर में. ओके मैम. बट इस बार कैसे आपको ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है. अभी कैसे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए बेसिकली जो न्यूमेरिकल रहेगा वो बहुत छोटा रहता है. बट कंपलसरी प्रॉब्लम ही है ना? हाँ, कंपल्सरी प्रॉब्लम. हाँ, आर यू फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जयश्री? यस मैम, आई एम कॉमर्स बैकग्राउंड बट हाँ थ्योरेटिकल भी चैप्टर रहते हैं ना. बेटा, जो थर्ड चैप्टर है ना वो ऐसा नहीं है कि उसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा, बट देयर आर चांसेस कि उसमें न्यूमेरिकल भी है. उसमें थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल की थ्योरी भी बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बोलेगा. वर्किंग कैपिटल की थ्योरी भी बहुत ज्यादा है. इवन आई नीड टू थिंक ओवर इट. अभी मैंने उसका किया नहीं है. आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो. ओके, तो उसका वैसे भी रहेगा. आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल टुमारो ओनली, बट स्टिल आई विल सी. ओके, उसका बहुत सिंपल रहता है. वर्किंग कैपिटल बेसिकली इज रिलेटेड, इफ यू कैन सी, वर्किंग कैपिटल आपका क्या रहता है, सिंपल फॉर्मूला रहता है करंट एसेट माइनस करंट. करंट लायबिलिटीज. ओके,
Yeah, but you need to remember, okay, आपको बहुत सारे parts दिए होंगे, you need to find out, okay, is it a part of a current asset or a not a current asset? So वो अगर आपको समझ में आएगा, then you will be able to do the math. Okay, ma'am. Okay, जयश्री? Yes, ma'am. Okay, don't worry about that. I'll take care कि मैं आपको working capital के numerical इस पे से कराऊं कि आपके लिए easy जाए. Okay, don't worry about that. I'll take care of that also. कि numerical ma'am. जितना हो सके कि मैं आपको easy करके सिखा दूंगी. तो उतना कुछ टफ नहीं आएगा, बिकॉज बहुत से बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो मुझे वैसा भी लेना ही पड़ेगा आपके साथ. ठीक है, अभी ऑनलाइन हो रहा है ना सब, इसीलिए प्रॉब्लम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना. तो जब कॉलेज स्टार्ट व्हाट होगा. आई विल डू इज, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, व्हाट आई विल स्टार्ट विद दिस. बेसिकली मैं जब करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सी व्हाट आई डू इज, लेट मी शो यू. आई स्टार्ट विद माय व्हाइट बोर्ड. ओके, दिस इज द बोर्ड. देन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट ऑन द बोर्ड ओन. सो देन इट बेसिकली बिकम वेरी इजी, क्योंकि आपके सामने सॉल्व करूंगी. इट्स बेसिकली लाइक आपकी क्लास बोर्ड पे जैसे सॉल्व होता है, वैसे ही मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ. ऐसा नहीं कि आपको दिया और सिर्फ उसका वर्बल कम्युनिकेशन पे बता दिया कि ये करना है. नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको वो समझ में आए कि कैसे करना है. ठीक है मैम. ठीक है, ओके, देन वी विल मीट टुमारो बाय 11. ओके, Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank हैव अ you. नाइस. Thank you, बाय. ma'am. Thank you, ma'am. ओके, बाय. Bye.